गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो कि आपका सोशल इशू के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन जो है वो उसी के अंदर कवर किया जाता है। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कंडक्ट किया है, जिसकी जो रिपोर्ट है 2021 के सर्वे की वो अभी रिलीज़ की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 80% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला कि पैंडमिक के टाइम पे स्कूल में उनको घर पे उनको पढ़ना जो है वो बर्डनसम लगा। 24% बच्चों ने ये बोला कि उनके पास कोई डिजिटल डिवाइस घर पे था नहीं। 45% स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस जॉयफुल लगा। 38% ने बोला कि उनको लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आई घर पे रहने की वजह से। अब अक्रॉस सब्जेक्ट्स और क्लासेस जो SC ST और OBC स्टूडेंट्स हैं वो बैड परफॉर्मर रहे इनके एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स। तो ये लर्निंग के लिए जो है टेस्ट करने के लिए सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो उसमें लर्निंग जो है देखा गया कि जनरल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में SC ST एंड OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स जो है वो वर्स परफॉर्मर्स थे। ठीक है, तो NAS जो है आपका नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये नेशनली कंडक्ट किया जाता है। एक तरह से स्टूडेंट्स में लर्निंग की क्या स्थिति चल रही है उसको जो है जानने के लिए कंडक्ट किया जाता है। क्लासेस 3rd, 5th, 8th और 10th के बच्चों में ये सर्वे किया जाता है। हर 3 साल बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको कंडक्ट करती है और NCERT इसके लिए जो है वो सर्वे का जो है शीट बनाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो है चिल्ड्रन की प्रोग्रेस क्या रही है, लर्निंग कॉम्पिटेंसीज कैसी रही हैं बच्चों की, और गवर्नमेंट उसके बेसिस पर जो है अप्रोप्रिएट स्टेप्स ले सके, इसके लिए ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे क्लास 3rd से लेकर 5th के जो बच्चे हैं उनको जो है उनके सर्वे किस कंटेक्स्ट में कवर किया जाता है कि लैंग्वेज में वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली क्लास 8th के बच्चों के लिए लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के अलावा साइंस और सोशल साइंस भी उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो देखा जाता है। क्लास 10th के बच्चों में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के अलावा इंग्लिश भी उनकी जो है टेस्ट की जाती है। ठीक है, तो अभी ये जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो अचीवमेंट का सर्वे का जो टेस्ट है, उसकी जो OMR 20 शीट होती है वो कौन डेवलप करता है? आपकी NCERT। ठीक है, इस सर्वे को CBSE एडमिनिस्टर करता है और एक ही दिन में सर्वे किया जाता है नेशन वाइड, और इसके रिजल्ट्स जो है वो 3 साल में एक बार सर्वे किया जाता है। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर बाय द नेक्स्ट ईयर, जैसे 2021 का सर्वे है तो उसके जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो जैसे 2022 अब वो सर्वे के रिजल्ट्स शेयर किए गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्स वर्कर्स। ये सोशल इशू का टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन जो है वो डिक्लेयर किया है। कैसे डिक्लेयर किया है? इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी भी डिग्निटी है, उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ मिलनी चाहिए, और पुलिस को बोला कि वो डायरेक्टली या किसी भी तरह से या इनडायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकती अगेंस्ट देम। ठीक है, जो एडल्ट और कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स हैं उनके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो कोर्ट ने कुछ राइट्स उनके बताए हैं, जैसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो उन्होंने बोला है कि एज और कंसेंट है अगर, तो उनके पास भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का राइट है। और अगर जो उनके चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स, उन्होंने बोला है कि अगर उनके चिल्ड्रन हैं उनको सिर्फ इस वजह से आप उनसे सेपरेट नहीं कर सकते सेक्स वर्कर से, बिकॉज उनके जो मदर है वो सेक्स ट्रेड में है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर सेक्स वर्कर है तो वो उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता। तो पुलिस को बोला है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है नॉर्मल लोगों में और सेक्स वर्कर्स में। आपको इन केस अगर सेक्स वर्कर कोई कंप्लेंट कराने आती है तो है सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट उनकी भी सुनी जानी चाहिए। फिर मीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको अटमोस्ट केयर रखनी है इन केस अगर कभी अरेस्ट हो रहे हैं, रेड हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी जो है आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है उनके राइट्स जो है आउटलाइन किए हैं। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस टॉपिक का, तो आपको एक तरह से रेडीमेड आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक्चुअली इंडिया में जो लेजिस्लेशन गवर्न करता है सेक्स वर्क से वो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। 1956 में एक्ट को पास किया गया था। इसके अंदर सेक्स वर्क या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको जो है बैन किया हुआ है। अब ये बहुत पुराना लॉ है, बहुत रिग्रेसिव व्यू रखता है। उसमें ये कहते हैं, इसमें ये माना जाता है इस लॉ में कि सेक्स वर्क जो है वो मॉरली रॉन्ग है। ठीक है, और इसमें ये कहा जाता है कि जो इनवॉलंटरीली
सेक्स वर्क में जाती हैं और जो है विमेन, वो उन लोगों को बचाने की ज़रूरत है, उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। तो मतलब इसमें ये एक तरह से प्री सपोज किया गया है कि जो भी सेक्स वर्कर है उसको हमें बचाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं देख रहे कि क्या पता वो अपनी मर्ज़ी से गई हो, अपने कंसेंट से गई हो, बिकॉज ऑफ बीइंग एन एडल्ट, वो इसको एक प्रोफेशन देख रही हो, इसको एक वर्क देख रही हो। हम इसको वर्क नहीं देखते, हम इसमें को ऐसे देखते हैं कि हम इसको एक रिग्रेसिव मॉरल व्यू से देखते हैं और कहते हैं कि हम विमेन को इसमें से प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें से उनको बचा कर निकालेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। तो एक ये प्रेजुडिस है विमेन के खिलाफ कि जो सेक्स वर्क कर रही है वो मॉरली डेवियस है, ठीक है। सो अब ये एक्ट कैसे पिनलाइज कर रहा है, इस एक्ट की वजह से जो सेक्स वर्कर्स हैं वो पिनलाइज हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ता है, क्योंकि उनको बैन किया हुआ है हमने। तो वो ज़्यादा, क्योंकि अंडरग्राउंड रहने की वजह से वो ज़्यादा प्रोन टू वायलेंस होती है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ज़्यादा होता है, हरासमेंट ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंप्लेंट कहाँ से करेंगी, क्योंकि हमने तो उनका तो जो वो कर रही हैं काम, वो हमने बैन किया हुआ है, तो वो पुलिस के पास जा ही नहीं सकती, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, तो उनको इसलिए ज़्यादा वायलेंस उनके साथ होता है। अब एक इंडिविजुअल को उसकी बॉडी के ऊपर राइट नहीं देता ये एक्ट, तो एक तरह से विल ऑफ द स्टेट जो है हम एडल्ट्स के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। फिर बहुत सी जो विमेन हैं वो विलिंगली इसमें एग्रीमेंट में चली जाती हैं ट्रैफिकर्स के साथ कि आप हमें ट्रैफिक ही कर लो, इससे अच्छा, बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो ना तो वो रिहेबिलिटेशन के लिए जा सकती, क्योंकि वो कैसे एक्सेप्ट करेंगी, ना तो उन्हें सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है और ना ही उनको लॉ जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो हमें ये डिस्टिंक्शन बनानी पड़ेगी कि विमेन जो ट्रैफिक करके जिनको कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए लेके जाया जा रहा है उनमें डिस्टिंक्शन करो, और उन एडल्ट कंसेंटिंग विमेन में जो है डिस्क्रिमिनेशन करो जो खुद अपनी मर्जी से इसको एज अ वर्क करना चाहती हैं। तो सबसे बड़ी बात, हमको इसके ऊपर कोई मोरालिटी नहीं लगानी है। अगर कोई करना चाहता है ऐसा काम, कोई ऐसा एडल्ट है और एक कंसेंट है उसका, और वो अपनी आउट ऑफ ऑन वॉल्यूशन इसको काम को करना चाहता है, तो आप उसके ऊपर मोरालिटी एटलीस्ट मत लगाओ, क्योंकि वो उनका खुद का राइट है कि वो क्या काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये आपका पूरा एक तरह से आपको एक आंसर के फॉर्मेट में ये आपको टॉपिक मिल गया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा पुराना टॉपिक है ये, आई थिंक 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है ये, तो ये मिस हो गई थी, इसको भी आज कवर कर लेते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी निकाली है। इसमें कहा गया है कि 2.5 बिलियन पीपल जो है उनको असिस्टिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जो आपके दिव्यांगजन हैं उनको असिस्टिव प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसमें से बिलियन ऑफ द जो लोग हैं उनको इसका एक्सेस नहीं मिल पाता है। और कहा गया इस रिपोर्ट में कि 2050 तक ये डिमांड जो है 3.5 बिलियन तक पहुंच जाएगी, लेकिन अफोर्डेबिलिटी एक मेजर बैरियर रहेगा एक्सेस में, तो इसलिए गवर्नमेंट्स को जो है इसमें आगे आना पड़ेगा इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? कोई भी ऐसा आइटम, पीस ऑफ इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या प्रोडक्ट सिस्टम जो कि फंक्शनल कैपेसिटीज़ इंप्रूव कर सकता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की, उसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल असिस्टिव टेक्नोलॉजी कवरेज लाना हमारा दायित्व बनता है, ताकि जो एटलीस्ट हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको किसी फाइनेंशियल या अदर हार्डशिप की वजह से उनको ये एक्सेस जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, जिससे उनकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, वो उनसे ना छीना जाए, ठीक है। तो एक प्रायोरिटी असिस्टिव प्रोडक्ट्स लिस्ट भी निकालता है WHO 2018 से, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से जो है असिस्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और वो कौन कौन से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ये मिल जा सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भील प्रदेश। तो डिमांड उठ रही है भील प्रदेश की एक सेपरेट स्टेट बनाने की ट्राइबल पीपल के लिए वेस्टर्न इंडिया में। अब एक्चुअली ये भील्स हैं कौन? ये आदिवासी एथनिक ग्रुप हैं वेस्ट इंडिया के, ट्राइबल पीपल हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में इनको ट्राइबल कैटेगरी जो है मिली हुई है। भील लैंग्वेज बोलते हैं ये। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी एक गुजरात में बनी थी 2017 में, और उन्होंने ये डिमांड रखी है कि भील प्रदेश नाम से एक स्टेट अलग बनाया जाए। 39 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 4 स्टेट्स में इस टाइम पर जो एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से कार्व आउट करके एक भील प्रदेश बनाया जाए जो कि ट्राइबल जो एक स्टेट होगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है, अब इसमें मानगढ़ मैसेकर की बात हो रही है। तो एक सोशल रिफॉर्मर थे, भील सोशल रिफॉर्मर और स्पिरिचुअल लीडर थे गोविंद गुरुजी। उन्होंने मानगढ़ मैसेकर के बाद 1913 में जो है डिमांड की थी कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए ट्राइबल्स के लिए, जब मानगढ़ मैसेकर हुआ था 1913 में। तो इस मानगढ़ मैसेकर को हम आदिवासी जलियांवाला भी कहते हैं, जबकि वो उससे पहले हुआ था, जलियांवाला मैसेकर से पहले। तो 1913 में हुआ था ये,
जब बहुत से भील ट्राइबल्स को जो है ब्रिटिश फोर्सेस ने जो है मार दिया था ऑन द हिल्स ऑफ मानगढ़, जो कि आपके राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। तो इसी के ही बाद जो है ये भील प्रदेश की डिमांड्स जो है, सेपरेट भील प्रदेश की डिमांड जो है वो उठाई गई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है निर्देशक। तो निर्देशक जो है वो सेकेंड ऑफ द 4 सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट सर्वे वेसल्स है, जो कि अभी जो है लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली चेन्नई में। तो एक्चुअली 4 सर्वे वेसल्स बनाए जाएंगे इंडियन नेवी के लिए। उसमें जो पहला था वो था आपका संधायक, और जो सेकंड है वो निर्देशक है। ठीक है, तो इसको कौन बना रहा है? इसको बना रहा है GRSC। ठीक है, तो GRSC जो है आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है कोलकाता, और LNT आपका लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये दोनों मिलकर जो है इसको बना रहे हैं। और इसका पहला जो है वो संधायक जो है ऑलरेडी जो हमने 5 दिसंबर 2021 को जो है वो लॉन्च कर दिया था। उसका सेकंड जो है वो आपका निर्देशक, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो एक्चुअली 4 शिप बननी है, 2 लॉन्च हो चुकी हैं, इसके बाद 2 और बची हैं। और ये क्यों, ये इन शिप्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एक्चुअली जो है ये शिप्स जो हैं ये एग्जिस्टिंग संधायक क्लास सर्वे शिप्स को रिप्लेस करेंगी, और इसमें हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट भी लगाया जाएगा ताकि ओशनोग्राफिक डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी है, कितनी डीप डिस्प्लेसमेंट है, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए इन शिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ओशनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए इन शिप्स का यूज़ किया जाएगा। ये बेसिकली सर्वे शिप्स हैं इंडियन नेवी की। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Achievement Survey. So National Achievement Survey was recently conducted by the Ministry of Education, and this survey report has been released this year. Actually, the survey was conducted during 2021, and the key highlights of this survey are that 80% students who were learning at home during the pandemic found it burdensome. 24% of the students accepted that they had no digital device at home, and so it means that their learning would have definitely been impacted. 45% of students found this experience of learning at home joyful, while 38% accepted that they had certain difficulties while learning at home. And when we saw when we conducted this survey, we saw that learning capabilities in terms of subjects and classes in that area, SC, ST and OBC students were performing worse than general category students. Okay, so what is this survey actually? Let us also see that. So it's a nationally representative large scale survey of students learning capabilities. It is conducted at classes 3, 5, 8 and 10. It is conducted by the Ministry of Education in every 3 years. Of course, last one was conducted in 2017, and the objective of this survey is to evaluate a child's progress and its learning competencies. So basically, once we conduct this survey, we evaluate the performance of our children and how they are learning, and based upon that, government would enable itself to take appropriate steps in case remedial actions are required at different levels. Okay, so what is the methodology? So for classes 3 and 5, we cover the subjects for our survey. These subjects are language, mathematics and environmental studies. For class 8, apart from language and mathematics, we also include science and social science. And for class 10, apart from language, mathematics, science and social science, we also conduct survey in the for the English subject. Okay. So it is a OMR based survey, and this OMR sheet is basically developed by the NCERT, which is also assisting the Ministry of Education in conducting this survey. And this survey is administered by the CBSE, and this survey is conducted on a single day at the same time along the entire country. Okay, so the next topic is sex worker. So this topic is important for your social issues. So this topic is very, very important because this time you may expect a question regarding this topic in the mains exam. Okay, so recently the Supreme Court has de facto recognized sex work as a profession, and it has said that the
the practitioners of sex work, they are also entitled to dignity and equal protection under the law. Okay, so it has also asked the police that they can neither interfere nor take any criminal action against adult and consenting sex workers. Okay, so only one section. Okay, so those who have been trafficked against their will, they are not, of course, they will not, they will continue to be banned, and they will continue to be rescued and rehabilitated. But those workers who are adults, and those who are doing it out of their own volition, they will not be treated as illegal. They will be their work would be recognized as a profession, and police cannot take any action against them. Okay, so apart from that, what else did the court observe? So court has observed that they also have a right to life and dignity in case they are having of course it would be decided in case they are of that particular age, and if of course if they are adult, and if they are doing this work out of their own volition, that is the consent only. After that, they will have equal protection under the law, and it would be considered as any other profession. So for the children of sex workers, the Supreme Court has said that a child of a sex worker should not be separated from the mother just because of on the ground that she is in the sex trade. And the police has been asked that they cannot discriminate against sex workers who want to lodge a criminal complaint. Okay, so it means that even sex workers can also be victims of sexual assault. So they must also be provided every facility, including the medical care that they deserve in case of a sexual assault. And the court has also asked the media that it should take utmost care, and it should not reveal the identities of sex workers during the arrest, raid, and rescue operations. So while we're discussing this topic, while the Supreme Court has given this judgment, let us also see this topic little more for our mains section. Okay, so the legislation which governs sex work in India is the Immoral Traffic Prevention Act of 1956. It penalizes these acts, and it also bans this trade. So it is a very archaic and a regressive view that this law is holding a very archaic and a regressive view that sex work is morally wrong. Even the ones who are adult and who are doing it out of their own desire, out of their own volition, even they are being barred because of this act. Okay, so because we have introduced our morality into what is wrong and what is right, these women are subject to illegality of the law. Okay, so we have a certain predisposition that our view is that these women are all doing it involuntarily, and these women need to be rescued. So we forget that there could be women who are doing it out of their own volition. So it is basically perpetuating a prejudice that women who practice sex work, they are morally devious. Okay, so how the act has penalized the sex workers? Because we have banned this, because we have declared it illegal. That's why this sex trade is going underground, and that's why these sex workers are stigmatized, and they're more prone to violence and discrimination and harassment, because they are of course doing illegal work, so they do not have any resort to any protection from the state. So these traffickers, they exercise utmost ownership over their bodies and over their decisions. So many women mostly willingly enter into agreements with these traffickers because they want to seek a better life as chosen by them. And because this act basically denies an individual their right over their bodies, and it imposes the will of the state over adults who want to articulate their life choices. Okay, so that's why this law is actually making it, just because we have made this law and we have made this act illegal, we are making these women more prone to violence, discrimination, and harassment. So what is the way forward? What must be done? So Justice Verma Commission was
was formed, and it examined this issue comprehensively, and it made a distinction that we should learn to see that there could be women who are trafficked for commercial sexual exploitation, but there could also be women who are adult, and they could be consenting women who are doing this sex work out of their own volition. So we must allow that, and we must recognize that sex work is also work, and we should stop ourselves from assigning our morality to their work. Okay, so this is the way forward. So this is basically a a ready-made answer for you, which you can write in case this question is encountered by you in your mains exam. So the next topic is global report on assistive technology. So this topic was, of course, we left this topic because of any reason. So now I am covering this topic again. So this topic is important for your social issues also. So this report has been launched by the World Health Organization and United Nations Children Fund. This is the first time this report has been launched, and this report is saying that 2.5 billion people in the world need one or more kind of assistive products, but a billion of them are being denied access due to of course financial and other reasons. Okay, and this report is saying that this number is likely to rise to 3.5 billion by the year 2050, and affordability would remain a major barrier to access. So that's why as a state, as a part of the state, it is our duty to make sure that financial difficulties at least should not be a barrier, and these persons with disabilities who can make their life a little better with these assistive technologies, they must be provided the access to these technologies. Okay, so what are these assistive technologies? So any piece of item, equipment, software program, or any product system which can improve the functional capabilities of persons with disabilities is called assistive technologies. Okay, so at least we should strive for universal assistive technology coverage around the world. And for that, priority assistive products list has been launched by the WHO in 2018. So the governments can see which kind of disability or which kind of elderly aids or elderly assistive technologies are available in the market, which can be provided to these people, so that they can make their lives a little better as compared to the status quo. Okay, so the next topic is Bhil Pradesh. So the demands of Bhil Pradesh are rising again, especially in the Western Indian states. So who are Bhils? Bhils are basically Adivasi ethnic groups of Western India. They are tribal people who are listed as tribal in the states of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, and Rajasthan. They speak the Bhil language. Okay, so a Bhil party also was formed in 2017, Bharatiya Tribal Party. It is a political party based in Gujarat, and it wants to create a Bhil Pradesh, that is a separate state for tribal people, which will be carved out of 39 districts of 4 states. And this is not the first time this demand has been arising. There was a Mangarh massacre which happened in 1913. After that massacre, the Bhil social reformer and spiritual leader Govind Guru also started demanding a separate state for tribals. So this massacre occurred at Mangarh, which is a hill on the borders of Rajasthan and Gujarat, and it predates even to the Jallianwala Bagh massacre. So this massacre occurred during the 1913 period. After that, this demand for Bhil Pradesh started. So the next topic is Nirdeshak. So this topic is important for your security perspective and even for your science and tech topic. So this Nirdeshak is the second of the 4 survey vessels which have been launched recently. So this is going to be a part of Sandhayak group of survey vessels. Sandhayak was the first vessel which was launched in December 2021. Now the second vessel has also been launched. So these vessels are being made by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, that is based on Kolkata, and the Larsen and Toubro Shipbuilding Company. So these are together through a collaborative effort, a public-private partnership. They are designing these vessels, and the aim is to build 4 such vessels. So let us also see about these ships.
So these vessels or these ships are Sandhayak class survey ships. These new generation, there is already an existing Sandhayak class survey ships, but these new Sandhayak class survey ships will replace them because they will now have hydrographic equipment so that we can collect oceanographic data. So they will undertake full scale coastal and deep water hydrographic surveys of ports and navigation channels, and they will also be deployed for collecting oceanographic and geophysical data. Okay, for of course defense and civil applications. So these were our topics for today. Today we have also shared with you the weekly current affair compilations. So download that also from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.